कश्मीर लाइफ के साइंस टॉक्स में आपका खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम है मंसूब उन मर्द और ख़वातीन को जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेबॉरेटरीज़ में खोजते हैं नई चीज़ें और उन मसलों के हल जो अभी तक इंसानियत को परेशान किए बैठे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री का मामला हो, चाहे वो फिज़िक्स का मामला हो, या वो लाइफ साइंस का मामला हो। तो आज की इस कड़ी में हमने दावत दी है डॉक्टर शेख रईस साहब को। डॉक्टर शेख रईस साहब CSIR IIIM में साइंटिस्ट हैं, ये ड्रग डेवलपमेंट और फार्माकोलॉजी के बैकग्राउंड से हैं, तो इनसे बात कर लेंगे इनके स्पेशलाइजेशन के हवाले से। डॉक्टर साहब, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइफ के शो में। शुरू इस बात से करेंगे कि हम बहुत खुशकिस्मत है, मतलब जो लोग इस वक्त 21वीं सदी में हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत ही इवाल्वड हो गया है। हालांकि ये बात सही है कि इंसान को अभी बहुत सा जानना है, इवन अपने बारे में, तो बीमारियों के बारे में या दवाइयों के बारे में, लेकिन फिर भी साइंस इतना एडवांस कर गया है कि नाउ वी नो लॉट मैनी थिंग्स। एग्जैक्टली। तो ड्रग्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स हैं, लेकिन हमारी जो पूरी फार्माकोलॉजी है, ड्रग बनाने का, दवाइयाँ बनाने का, दवाइयाँ इन्वेस्टिगेट करने का, ये जो पूरा सिलसिला है, एक प्रोसेस है, इसके नए गोल पोस्ट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं हमारे पास इस वक्त? अब देयर आर मल्टीपल at different levels. This is when we are moving towards drug development process. It starts with chemistry part, then biology part, and pharmacology. So at each step, if I'm not talking about the clinical trials, so initially in lab, wet lab. So chemistry people have their own challenges like scaffold finding, pharmacophore, and other things. So on the biology, it's first if the compound drug like molecule which there we are talking about is active also for a particular disease which is tested in mice में हो या cells में, जो भी system हो. So there are like a safety pharmacology इस compound का, particular compound का, what are the effect on the general body system of the body, so like central nervous system हो गया, cardiovascular system हो गया, respiratory. It's a set of parameters जो observe किया जाता है before it enters to the other phase in the laboratory itself. So safety pharmacology is one of them. Another is toxicology. So multiple doses के साथ क्या effect पड़ता है different parameters पे, hematology, biochemistry, repeated doses से क्या effect पड़ता है, and the pharmacokinetics, उस ड्रग का हाफ लाइफ क्या है, बायो अवेलेबिलिटी क्या है. सो दीज आर आई थिंक द बायोलॉजी साइड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आर देयर एंड दैट पुश ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. अगर उसमें ज़बरदस्त एक्टिविटी भी है, इट्स वेरी गुड फॉर ए पर्टिकुलर डिजीज, दे पुश इट टू द बैक और इट्स थ्रोन आउट बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजन्स. These are the three reasons on the biology. में भी बहुत सारे challenges बढ़ रहे हैं बेसिकली फार्माकोलॉजी के लिए, चाहे हम एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस देख लें, चाहे हम कुछ दवाइयों के, मतलब एक बीमारी का इलाज करते करते आप 4 नई बीमारियों को जन्म देते हैं. साइड इफ़ेक्ट जो जिनको कहते हैं, द वे वी आर टॉकिंग अबाउट साइड इफ़ेक्ट्स, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हमें सेफ्टी फार्माकोलॉजी में एग्जैक्टली जब हम व्हेन वी इंड्यूस, जब भी इंजेक्ट करते हैं, चाहे ओरल रूट या जैसे भी है, तो हम एक शॉर्ट रेंज के लिए सारे बॉडी ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं. वहाँ सेफ्टी फार्माकोलॉजी हमें पता है. इफ़ वी लैग देयर, तो अगर हम फिर भी किसी चीज़ को लेके एक्टिविटी कभी इतनी अच्छी होती है या फार्माकोकाइनेटिक्स अच्छी है, टॉक्सिटी नहीं है, तो पीपल नेगलेक्ट कपल ऑफ थिंग्स विच विल लेटर ऑन शो अप इन द क्लिनिकल ट्रायल्स. जैसे बैक्टीरियल रेजिस्टेंस की बात करें, ये तो एक्टिविटी पार्ट में आ जाता है. तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट इफ इट इज़ एक्टिव. So these three are the important things that determine safety pharmacology, toxicology, and pharmacokinetics. And of course the activity also, जैसे drug development, antibiotic resistance की बात कर रहे हैं, तो these are important challenges. मामला बहुत ही वसी है और दुनिया की कोई लैब ऐसी नहीं होगी शायद जो इस हवाले से काम नहीं कर रही होगी. और कश्मीर, जम्मू कश्मीर के हवाले से जब हम ये देखते हैं कि यहाँ जो दवाइयों के मसाइल हैं, तो मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स विच आर इन वो बाय एंड लार्ज आर बीइंग एक्सेस्ड फ्राम द प्लांट मटेरियल या जो भी है. तो हमारे यहाँ उस हिसाब से खुशकिस्मती है कि वी हैव डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स. तो यहाँ डिफरेंट किस्म के, लद्दाख में एक किस्म के प्लांट्स हैं,
कश्मीर में दूसरे किस्म के प्लांट्स है, पीर पंचाल रेंज में, फिर हम जाते हैं जो जम्मू के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ एक डिफरेंट, खैर वो एक लंबी कहानी है, उस पर बात तो इट इज़ अ ब्लेसिंग। कोई साइंटिस्ट मुझे ये कह रहा था कि जो लिस्ट है, एक इंडेक्स है उन प्लांट्स का, प्लांट मटेरियल का, ये पूरी दुनिया में, तो अगर हम देख लेंगे ऑलमोस्ट 50% के आसपास अवेलेबिलिटी हमारे जम्मू कश्मीर में है। तो वो लेकिन वो एक लंबी कहानी है और एक अलग फील्ड है, लेकिन उस पर तो बात कर ही लेंगे। लेकिन हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले रईस साहब ये जानना चाहेंगे आपकी ज़िंदगी के हवाले से, क्योंकि आपने स्कूल से लेकर CSIR IIIM में ज्वाइन करने के बीच में बहुत सा पढ़ा, बहुत सा लिखा, तो कुछ थोड़ा हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा अपनी ज़िंदगी के हवाले से। मैंने अपनी ग्रेजुएशन BSc कंप्लीट की इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग। स्कूलिंग भी अनंतनाग में? स्कूलिंग भी अनंतनाग से ही की मैंने, फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल and some private, mostly these. Then I did my masters in HNB Garhwal University. After that I moved to IIIM Jammu, where I took my admission in pharmacology. तो ये पहले आपने मास्टर्स किस सब्जेक्ट में किया? मास्टर्स आई डिड इन बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी जी। आपने कश्मीर यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं की? यहाँ बायोटेक्नोलॉजी तब भी शायद पढ़ाया जाता था। या मैं आई वॉज नॉट, I gave one exam there, I was not selected for the same. मेरा शॉर्ट वेटिंग लिस्ट में आ गया था, सो तब तक मैं एडमिशन, आई हैड टू गेट एडमिशन समवेयर एल्स, सो आई कंटिन्यूड विदाउट वेस्टिंग टाइम। बहुत सारे जो साइंस स्ट्रीम से होते हैं उनका तो एक फैसला बहुत बड़ा होता है 12वीं जमात का। हाँ, तो तब क्योंकि यहाँ दो ही ऑप्शंस हैं कश्मीर में, या इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, तो आपके यहाँ वो टेस्ट नहीं हुआ? हाँ, ऑफ कोर्स आई वर्कड वेरी हार्ड फॉर दैट, आई मीन वेरी हार्ड फॉर दैट. I couldn't get through. So after completing my 12th, I was one of the toppers in the school and around. So I couldn't clear that entrance exam. I fell short for few numbers. Of course, वो एक नंबर भी उसमें 1000 लोग आ जाते हैं. So I couldn't. Then I chose. Actually, I wanted to go for PhD since childhood. बहुत पहले I wanted to go for PhD. So this was not, it looks grapes are sour, but people who know me, they know it, that I wanted to go for PhD. So without looking back, उसके बाद I completed BSc, then biotechnology purposefully. Then I went in IIIM Jammu, इसी पर्पज़ से कि रिसर्च वहाँ पे बहुत अच्छी होती है, and which I agree also, and everybody knows we have been publishing good and great. सो वहाँ पे मैंने PhD का एडमिशन लिया। PhD में ये बात सही है जो आपने फरमाया, इसके लिए सोसाइटी के प्रायोरिटीज़ होते हैं, वो कभी कभी क्लैश करते हैं इंडिविजुअल प्रायोरिटी के साथ। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप MBBS को बड़ी अहमियत देते हैं, लेकिन उनका बच्चा PhD को ही, हालांकि उसमें 3 ही लेटर्स हैं MBBS के मुकाबले में, तो उनको ज़्यादा हैवी लगता है, मतलब ऐसा होता है। लेकिन PhD में आपने काम किस पर किया, एंड व्हाट वर द टेक अवेज फ्रॉम योर रिसर्च एट PhD लेवल? PhD में मैंने जहाँ फार्माकोलॉजी डिवीज़न से CSIR IIIM से PhD की है, डॉक्टर गुरदर्शन सिंह, डॉक्टर जौहरी के साथ। तो मेरा काम जो था उसमें इट वाज 2 हेडेड, एक तो ड्रग डेवलपमेंट अगेंस्ट एज़मा, सो एंड आई वाज अदर पार्ट ऑफ द PhD वाज जनरल फार्माकोलॉजी, सेफ्टी फार्माकोलॉजी, द वन आई वाज टॉकिंग अबाउट टॉक्सिकोलॉजी. So these are the 2 parts I had included in my PhD. So then I worked with a brilliant chemist there, my boss and me, and they were able to synthesize a series of molecules with end asthma activity. हमारा पर्पज़ ये था, we screen those molecules for this activity, and then selected good leads from them, and finally took one molecule with good pharmacokinetic profile, good pharmacodynamic profile, and I took it to the final, जो मेरे PhD का topic बना. For this I had to work with other scientists also, like I work in IIIM Delhi for the same, and इंस्टीट्यूट में भी अलग अलग साइंटिस्ट लोगों के साथ इस चीज़ पे मैंने काम किया. सो दैट वाज मोस्टली
8. So I published couple of mostly 4 first author papers from my PhD, which is good actually. 4 फर्स्ट ऑथर पेपर्स आर गुड इन पीएचडी. Yeah, this पीएचडी तो एक को ऑथर से भी हो सकता है. जो बेसिकली आप अस्थमा की बात करें, उसको कश्मीर में अस्थमा कहते हैं. asthma. इसके लिए लंग डिजीज है जिसमें लंग की ब्रीथिंग कैपेसिटी, मेन कोर कंपिटेंस जो लंग की है, प्राइमरी है, तो वो किसी तरह से कमज़ोर या कंप्रोमाइज हो जाती है. उसी को अस्थमा कहते हैं, जब कोई ठीक तरह से सांस नहीं ले पाता है. लेकिन आप अस्थमा के किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में पीएचडी कर रहे थे? Exactly, it was जैसे एज़मा हम जनरल एक टर्म को लेके बोलते हैं कि अस्थमा है उसको. सो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स, इफ इट इज़ ब्रोंकोडाइलेशन, ब्रोंकोकंस्ट्रक्शन, जिसको लेके सैल्ब्यूटामॉल यूज़ किया जाता है, सो ताकि ब्रोंकस ओपन हो जाए, एयरवे इनटेक ठीक हो जाए, अच्छे से हो जाए. दूसरा तो है क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी एज़मा, एलर्जिक एज़मा. सो उसमें जैसे इन्फ्लामेटरी सेल काउंट ज़्यादा हो जाता है, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन ज़्यादा हो जाते हैं, एंड इज़ अ कंसिस्टेंट कंडीशन पीपल हैव. सो ये 2 टाइप के होते हैं. सो मोस्टली मेजर 2 टाइप्स होते हैं. इसमें भी अलग अलग ब्रांचेस हैं, बट 2 टाइप है कि ब्रोंकोडाइलेशन, इस ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एंड एलर्जिक एज़मा. सो द मॉलिक्यूल आई वाज वर्किंग ऑन हैड बोथ टाइप ऑफ एक्टिविटीज़. सो it could have been used as a bronchodilator also, and for this allergic asthma also. So but because ये 2 अलग अलग फील्ड हैं, और अलग नहीं बट सेम, बट इट विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम एंड डेडिकेशन टू कंप्लीट बोथ द कंपोनेंट्स. सो आई कंटिन्यूड विथ एलर्जिक एज़मा. सो हमारा बेसिकली फॉर स्क्रीनिंग वी हैड सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्क्रीन इट द मॉलिक्यूल्स फॉर दिस ब्रोंकोकंस्ट्रक्शन, ब्रोंकोडाइलेशन थिंग, बट फर्दर कैरी करने के लिए वी डोंट हैड इंफ्रास्ट्रक्चर देयर. So I had to stop that component there. I carried on this allergic asthma part of it. So it had a pretty good activity. Was there later some activity on that follow up कि इसको नई लेवल पे ले जाएंगे उस काम को? सर ये एक्चुअली उस बारे में क्या होता है कि CSR में when director changes, he has his own motives and he has his own things how a lab should be working. So I think when I left this जो ये asthma का project था, it was closed because Dr. Johari जो carry कर रहे थे इस project को, initially he was supervising me, a very brilliant scientist. So when he retired and I think उसके बाद it was closed, the asthma chapter was closed there. So because जो पीछे साइंटिस्ट रह गए थे वहाँ पे, उनकी एक्सपर्टाइज नहीं थी ये. That's why I had to move to IIIM Delhi to complete my further components of it. डॉक्टर रईस साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा. ये ज़रूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब आपके पास हो, लेकिन एक आम सी बात है कि ये जो लंग्स होते हैं, ये क्या होता है? ये 2 थैले होते हैं हवा खींचने के. 2 बड़े थैले हैं, लेकिन इन थैलों में थैलियाँ, और ये बहुत एक इंट्रिकेट और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है. और इसको चूँकि हम हवा में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख भी नहीं सकते, सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शंस हैं, इसी वजह से बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, वायरसेस भी आते रहते हैं, और शायद इसी वजह से कि मतलब हमारी नाक में जो बाल वगैरह का इसने मतलब रखे गए हैं, फितरत ने रखे हैं, वो इसलिए कि किसी तरह से उस पोल्यूशन को किसी तरह कंट्रोल किया जाए. तो लेकिन फिर भी इन छोटी छोटी थैलियों में, चाहे कोई स्मोकिंग करता हो या किसी ऐसे ऑक्यूपेशन में हो जहाँ बहुत सारा डस्ट पैदा होता हो, सवाल मेरा डॉक्टर साहब ये है कि इज़ देयर सम काइंड ऑफ मेडिसिन और टेक्नोलॉजी कि जिसमें इन थैलियों को साफ किया जाए? जैसे आपने कहा, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम and you cannot do like kind of surgery जिसको आप you can clean them because lung is composed of, जैसे आप 2 नहीं, it's this multiple lobes there, और multiple lobes में भी alveoli होते हैं, lakhs of those alveoli are there. So lung ऊपर से लग रहा है intact organ है, but it it's very it's a maze. जैसे it's very hard to इसको surgically operate किया जाए. फिर you have, if there is any complication you can cure that, it's very difficult because there are individual components there, alveoli sacs होते हैं, so it's very difficult to clear. So but yeah, if there is any medication, जैसे आपने कहा उनको clean किया जाए,
So there is any medication herbal they claim that you can clean the alveolar sacs. I have no knowledge because I honestly I don't believe much on the herbal because उनमें clinical trials नहीं होती हैं. Unless there are not clinical trials, I think we should not. तो several herbal drugs claim कि lungs को clean किया जा सकता है. Exercising, running, it can really help. That could be really beneficial for it. But I'm not sure कि ऐसा कोई drug है जो बता सके हाँ we can clean the sacs. Because एक तो होते हैं जैसे अपने cleaning कहा, it's a general term. There are very complicated things if we talk about क्या जब smoking हो जाए या dust allergy हो जाए तो कैसे clean किया जा सकता है और actually होता क्या है वहाँ पे surfactant proteins हैं. तो इसलिए नेचर ने खुद एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है इसको क्लीन करने का. तो वो चीज़ चलती रहती है वहाँ पे जो नॉर्मल सिचुएशंस में डस्ट बलगम पैदा होता है और वो इट विल बी ऑटोमेटिकली थ्रोन आउट. बट फॉर स्मोक एंड एवरीथिंग जिसके लिए लंग्स रेडी नहीं है, जिसकी वजह से लेटर इन्फ्लामेटरी डिजीजेस और अदर एलिमेंट्स हो जाते हैं, तो देयर इज़ नो सच थिंग वेयर वी कैन क्लीन देम. सब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ा देंगे. तो इसके बाद पीएचडी के बाद आपने पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज़ की, रिसर्च किया, तो उसके लिए आपने क्या किया, कहाँ गए आप? When I completed my PhD, very quickly, I got my postdoc at a couple of places, but I prefer to do work on the lung diseases. So luckily I joined a group in University of Illinois at Chicago. तो वहाँ पे कंटिन्यू मैंने किया अपना पोस्ट डॉक इन लंग डिजीजेस. तो क्या था, व्हाट वाज द फोकस एंड व्हाट वाज द टेकअवेज? या इट वाज वेरी प्रोडक्टिव. ये जो मेरा पोस्ट डॉक का काम था, इट वाज नॉट अबाउट ड्रग डेवलपमेंट. इट वाज अबाउट एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो हाइपर इन्फ्लामेशन हो जाती है लंग की. जैसे रिसेंटली एवरीबडी नोज अबाउट कोविड नाउ. इट्स मोस्टली अबाउट COVID is about two parts. Other part is the hyper inflammation, जिसकी वजह से mortalities हो जाती हैं. तो hyper inflammation, it was about hyper inflammation and what are the signaling cascades, कौन से proteins responsible हैं जिनकी वजह से होता है ये सब. So I learned a great deal of things there about this hyper inflammation, or it was basic biology, not about drug development. So yeah, so if you want I can please explain. So I learned, the one thing I learned for sure is that जब general inflammation हो जाती है lungs को, I believe, and there are articles also, I also found the basic thing that inflammation mostly cure हो जाती है, हो सकती है. But जब inflammation हो रही होती है, there are other proteins that are activated, that जिनकी क्रॉस टॉक चल रही होती है, तो दे मेक द थिंग्स वर्स. फॉर एग्जांपल अगर हम बैक्टीरियल कंपोनेंट की बात करें, एलपीएस लाइपोपॉलीसैकेराइड की बात करें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें, सो एनएफ का भी एक पाथवे एक्टिवेट हो जाती है जिसकी वजह से साइटोकाइन्स रिलीज हो जाते हैं. एंड बट आई बिलीव इफ इट इज़ ओनली TLR4 पाथवे, इन्फ्लामेशन विल बी रिजॉल्व. हम में इतना सिस्टम होता है, नेचुरली वी कैन रिजॉल्व इन्फ्लामेशन. बट देयर आर अदर पाथवेज दैट आर एट द सेम टाइम एक्टिवेटेड जो इसको वर्स बनाते हैं. So I found in my postdoc, I'll tell in brief. So I found that when inflammation induced his lungs, so the residential macrophages of the lung, which are called alveolar macrophages, they are the first respondents of this inflammation. So there is a protein on these macrophages that's called actually G protein coupled receptor. It's called a PAR2, protease activated receptor 2. So when inflammation induced, this protease activated receptor is responsible for the break of this inflammation. So inflammation automatically it gets resolved to some extent. If it is not worse, it gets resolved and you are good next day or next 2 days. But I found that if we take out this receptor out of the cells, what can happen? So when we took out this receptor out of the cells, we are able to found that there is gruesome and there's kind of hyperinflammation that happens in the lung, which leads to mortality of mice without this receptor.
So basically the job of this receptor was when inflammation induced, at some point it puts a brake on the inflammation and the inflammation is resolved. So they, of course, there's a particular pathway how it is targeted, how it interacts with this cascade. So जिस lab में मैं काम कर रहा था वहाँ we were mostly it was about GPCR signaling and diseases. So we studied the whole signaling pathway in this. What are the other components? They say this GPCR is on the receptor of the cell. This is the receptor on the membrane of the cell. What are the other components that are in the cytoplasm near to the membrane? How they talk with each other with the NF-kappa B pathway. And we found another layer of complication was there. Another pathway that gets activated is another TRPV4 channel. So how these three pathways interact and talk to each other. So then we were able to nicely elucidate on this and found how we can fix it also. There are components also, experiments also, where we are able to see the rescue experiments, how we can fix it, what are the possibilities and options that can take us out of this. So this was the whole paper. So one more thing recent, this was one of the papers. Another paper was I studied the interaction between Pseudomonas aeruginosa. This is another paper, another study. Pseudomonas aeruginosa, we know about the bacteria. The physical interaction between Pseudomonas aeruginosa and this GPCR, G protein coupled receptor. So there also I found that it's a different paper though, different study, that if GPCR is not there, how on the alveolar macrophages, again on the if this GPCR is not there, how gruesome and how harsh it can be on the lungs and how it leads to mortality. So this GPCR, it's very important in both bacterial infections, how it can save us from hyperinflammation, and which leads to sometimes mortality, if not, but hyperinflammation. You had worked on these two things that you actually worked on. Nobody, yeah. People have been working on this receptor for so long about other things, but this was the first study of its type. In fact, in the first study, I also found thrombin, which is a protease. This was a part of it that we found for the first time. We reported. Most of it was reported the first time, but this was another component, the thrombin that's activated, released during inflammation. It actually directly binds to this receptor. That plays a major part, and actually it has an impact on the physiology during the disease biology. For that, I had to collaborate with a group in Canada. They made constructs for us, FRET. Of course, the biologists who know it, who can see, they know it. So we constructed FRET constructs for this, and we were able to actually see through live imaging how it happens, this ligation and then internalization of the GPCR and everything. So what was the follow-up? Is somebody working on it in the same lab where you did your postdoctorate? In the same lab, nobody is working. I published 2 papers, but I could see the citations of my article. People have been following because the one takeaway from this was that TRPV4 channel is important in this inflammation, and I see there are so many. I get citations from for my paper. People have been working on this TRPV4 channel for synthesizing inhibitors against this channel for different diseases. So people follow up. But the inhibitor is yet to come out. People were doing on inhibitors already, but I don't know, it has made some impact. People are working. So how much time did you spend on these 2 studies? कितने बरस लगे आपको? It took me 5 years. For basic biology, it's a good amount of time it takes it, because after you get some result, you are not sure what kind of experiment I have to do. You have to actually devise the experiment yourself. Unlike drug discovery, so there are set parameters. You do this and that. For basic, you have to actually devise and the experiments and rule out things. And other co-author papers were already there. I was working with. They are unpublished or already published. Good papers.
सो उसके बाद आप वापस आ गए. Yeah, I got my fellowship from DBT, Ramalinga Swami Fellowship, which of course you know about. And since almost 1.5 years, I have been working in CSI IIIM as a Ramalinga Swami Fellow. सो यहाँ फोकस क्या है आपका? आपने इसी इंस्टीट्यूशन से PhD किया, इसी इंस्टीट्यूशन में आपने इस पर काम किया, उसके बाद लंग्स के बारे में काम किया US में. तो अब क्या आपका व्हाट इज द कोर फोकस? कोर फोकस सर ये है कि जैसे इन माई PhD आई हैड गुड एक्सपर्टाइज ऑन ड्रग डेवलपमेंट techniques and understanding of this process and this so then when I moved to US, I studied basic biology about this acute respiratory distress syndrome, acute lung injury. So I think then I wrote a grant about combination of both. So right now I am working on acute respiratory distress syndrome and I am targeting different proteins which can hopefully lead us to development of small molecule inhibitors against this particular disease. I'm working on TRPV4 channel also. I'm working on couple of other proteins also, and they are crosstalk with each other, so we can hopefully come up with something good. And I have good leads and work is going nicely, smoothly. I'm making collaborations also because you don't have all the infrastructure and facilities present around you. So I'm collaborating with people around in and inside the country and outside. I'm pushing it also. So hopefully we'll get good stuff. Doing science is time consuming resource, बहुत जाता है इसमें, ज़रूरत होती है इसमें. But it hopefully should take a couple of years for the first paper to come out on this. I'll get one or two paper within 1 year, but I am eyeing for good big papers which will take exactly the same amount of time, because small papers they will take small amount of time. Then if you are pushing for good papers, it's going to take some time. So same thing. साइंस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारा टाइम देते हैं, फिर वो जिस चीज़ की तलाश में चलते हैं वो शायद कभी मिलता भी नहीं है. और ऐसा भी होता है कि कोई शख्स किसी पर्टिकुलर चीज़ की तलाश में है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन उसको कोई दूसरी चीज़ मिल ही जाती है. Exactly. Happened with me also. When I moved for my postdoctoral research, so I was working on a protein transcription factor CREB. So I started working on it for almost 5 years. This was my actual postdoctoral project. So I couldn't get the results properly, or results were on and off. Every time we had to generate 5 knockout mice for this. So finally setbacks, replicate, I mean sometimes you get results, sometimes because the knockout thing it's not properly knockout hona chahiye, nahi hona from the mice and things like that. Other things that came up, it gave me good hard time to establish that project. But when I established it, still I had to leave after that. So people are working on that also again. I heard we got a good grant from the NIH for that project. So this is, but at the same time I thought my postdoctoral boss mentor believed that you should start working on other GPSR also, which we actually got lead from this project while we were doing RNA-seq. I started working on this project also, and that was going on smoothly side by side. Unless when I left, it was almost 60% or 65% of the project was complete, but I had to leave. So presuming that जो आपके लीड्स अवेलेबल हैं इस वक्त अबाउट योर रिसर्च जो आप इस वक्त कर रहे हैं एंटी इन्फ्लेमेशन पर, तो ये जब वाकई फाइनल हो जाएगा, पेपर आ जाएगा, तो ये इंसान को जो इस वक्त की सिचुएशन है हमारी ड्रग के हवाले से, तो वायर इट विल बी वाइटल फॉर अस नाउ. We are presuming that your leads are positive and you are getting it. I am working right now I am working with good, brilliant chemists there, and with my knowledge of two things, drug development and basic biology.
So I'm using good models and mice models, cell-based models, and I'm hopeful that we'll get good small molecule inhibitor against this particular disease. And one important thing, it's not always about getting papers published. I have published also, postdoc also, here also. So I believe it's very important to get something productive out of that also after the paper is published. As I said, it's not only about publishing the papers. We should push the molecule. I want to I'm looking for a molecule which I can take beyond the papers, which we can go for other things, for clinical trials later and stuff like that. तो प्रॉब्लम बेसिकली होती है कि ये खोज जो है और इस खोज का जो प्रोसेस होता है बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है. इट टेक्स ऑलमोस्ट अ डिकेड इन मोस्ट सिविलाइज्ड वर्ल्ड 11 years, फ्रॉम मूविंग फॉर अ मॉलिक्यूल टू मूव फ्रॉम अ लैब टू द मार्केट 11-12 years maybe, yeah. तो ये तो सिविलाइज्ड. तो यहाँ हम वैसे भी हमारा पेस थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है. तो बट लेट अस होप दैट रईस साहब जब आप अपनी इस तहकीक में एक ख़ास नतीजे पर पहुँचेंगे तब इंशाल्लाह हम आपको फिर तकलीफ़ देंगे इस पर बात करने के लिए. Of course, I will love to. आपने इतने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए इतना टाइम निकाला. वी आर सो थैंकफुल टू यू एंड वी होप कि हम आइंदा फिर मिलेंगे, फिर साइंस पर बात करेंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for your time.